whenever I am going to log in, I have to identify ourselves. That is my username and password. Identity is over. Access management, I have to the root user, the administrator, they allow some access to this user. What I am going to access? Suppose if I am going to create one user, in AWS and grant some permission, what type of permission? I granting EC2 full access. So this user is going to create EC2, delete EC2, modify EC2, everything is possible. But this user cannot create S3 because root user didn't grant this one. Understand? This is IAM. After that, we are going to learn CLI, command line interface. That is, through command line, I am going to create one resource in AWS. Okay? Then MFA, because you already create your account. Now 30 days option is there. Within this, you have to create MFA, multi-factor authenticator. That means OTP based. Okay, we have to link our account and our mobile. Account and mobile connected. So whenever you try to log in, it is going to ask the OTP. You have to pass the OTP from your mobile. Okay, these three topics. So first, IAM, identity and access management. That is, I am going to create one user and try to log in. Sign into AWS as a root user. Now I have to put MFA 833597. This is IAM. Click here. First, user creation, then roles. In future, I will show you policies also. Policy, basically it is a JSON code. Policy means what type of permissions. But we have no idea about JSON code. So how to create policy? So I will show you. AWS provide one policy creation JSON code related. You just mention what is your requirement. It is going to create the policy. So no need to write any code. So let's see user. Already one user is there. I'm just going to delete it. I'm going to create one user. Username and provide user access to the AWS management console. Management console means graphically. Specify a user identity center. Our requirement is IAM user. Okay? Our requirement is IAM user. In future we will discuss is what is this. Now password, custom password. I am setting password capital W, welcome 123 at. Fine. And one option is that user must create a new password at next sign in. I just uncheck it. Right now it is not required. So let's next. Now it is asking this user is permission purpose. It is going to add to a group, copy permission from another user and paste it here, or attach policy directly. I am going to use attach policy directly. Now these are the different policies there. 1336 policies are there. I am granting some permissions. Okay. So initially I am going to grant EC2 full access. This one. Then next, review, create.
User is created, and this is the password, and this is the username. Fine. Now I want to log in and I want to check it. Login and checking purpose, best option, utilize any other browser or within this same incognito window. Okay, otherwise it is, maybe it is going to log out. So use other browser or this, and this is your URL. Paste the URL and enter. Now here it will show this account ID, that is that root account ID. Under that IAM user name. Yeah, that is root account. And password, sign in. Check it here, Sai at the rate of that ID. Sai is login within this root account. Okay, but limited permission. Only EC2 full. And by mistake it is moved to Europe. सुबह यूरोप चला गया, मुंबई. So check it. User Sai is logged in, and user Sai try to create one EC2. Instance, launch instance. It is possible, allowing. But जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत लेवल का सपोर्ट टीम होता है ना, तो एक लो लेवल सपोर्ट टीम, वो सिर्फ EC2 को ही देख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लेवल EC2, S3, BPC, these are, वो लोग वही देख रहे हैं. कहाँ फुल एक्सेस दिया? क्या दिया मैंने? उसका आगे भी कुछ थी ना, आगे पीछे. Amazon EC2 फुल एक्सेस, ये था पूरा उसका नाम. ओनली फुल एक्सेस नहीं. जैसे कि कंपनी में एक आईटी टीम होती है, वो एक यूजर आईडी क्रिएट करती है नए एम्प्लॉय के लिए, तो वही अभी हमने किया है. हाँ, ठीक है, वो यूजर वही काम करे. ठीक है, इसमें जो एक्सेस होता है, जैसे कि लिनक्स में होता है 3 एक्सेस होते हैं, मतलब वो छोड़ो. लिनक्स क्यों यहाँ ला रहे हो? नहीं 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 नहीं, अभी तुम दिल्ली का राजमा चावल के साथ यहाँ अगर सांभर चावल का तुम कंपेयर करोगे तो वो तो पूरा ही अलग हो गया ना. चावल चावल है, साथ में तो अलग हो गया. तो वहाँ का परमिशन कुछ था, यहाँ का परमिशन कुछ है, अलग तरीके का है. देखो, बकेट, मैं बकेट क्रिएट कर रहा हूँ. क्रिएट बकेट. पहले क्या दिया? बकेट टाइप. चलो, जनरल पर्पस, बकेट नेम 2 3 4 5 एम दे दिया. ऑब्जेक्ट ओनरशिप ACL डिसेबल, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक, कुछ भी नहीं चाहिए. माई टारगेट इज क्रिएट बकेट. सो नेम is already used, so I am going to use MN SN 1429, कुछ different type. Create bucket. Check it. Failed to create bucket. Learn more about this. Okay. ये कभी नहीं बनाएगा क्योंकि परमिशन ही है नहीं इसके पास, तो कैसे बनाएगा S3. ठीक है.
So bucket is not possible. So it is clear how to create one user, and then I'm just going to log out, sign out. So this is an user just now I created, and I checked using login and check it permissions. Okay, that portion is over. Now another option is there. सर ये यूजर को डिलीट करना कैसे करेंगे? दिखाता हूँ. अभी एक यूजर को डिलीट किया था ना, जो एग्जिस्टिंग था किट्टू, इसको भी डिलीट करेंगे. सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट है. डिलीट करना कोई मैटर नहीं है. कितना हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपली फ्री अकाउंट क्या? यूजर? इसका कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, कुछ भी. और ये फ्री अकाउंट, मतलब यूजर बनाओ, कोई मैटर नहीं है, ये फ्री है. So Sai user, now what is my target? I want to modify the permission. Last time I used Amazon EC2 full access. Now I am going to add permission. Policy directly. Which permission I am going to add? Administrator access. That is full access. Okay. And then next, add permission. तो परमिशन ऐड हो गया. नाउ Amazon EC2 full access, it is not required. You can remove it because administrator access means already everything is there, right? अलग से वो नहीं चाहिए. স্যার ওইরকম বলছি এগুলো বেসিক্যালি প্রিভিলেজ, রাইট? Privilege. মানে ডেটাবেস, মানে যদি কম্পেয়ার করি, দিস আর প্রিভিলেজেস বেসিক্যালি. Database background है privilege. Okay, so modification also over. Fine. Now within this user, let it be, later I am going to use roles. What is roles? Collection of privileges, collection of permissions. Okay, suppose I am going to create one role. See, already few roles created. EC2, AWS EC2 6 days before, 34 days before, 1 hour before. So create role. Why I am creating this role? I want to attach to AWS service. Okay. Service or use case. Which one? Suppose I am going to choose EC2. In future I will show you with Lambda. That means this role, when I am going to create, what is my target? I want to attach to EC2. Fine. Then permission policies. From here I have to choose. Suppose I am going to choose EC2 full, this one, again close it, S3 full, this one, close it, Lambda full, deep lens Lambda full, Lambda function access, not Lambda full, Lambda function. Collection of permissions. फिर next. Now role name. Suppose RX 6th March. Okay, role and description mandatory. So RX. Automatically it is going to create this JSON code. Okay, you can write this JSON code also directly. That is also possible. Any other permission if you want to add, you can add. We already add EC2 full, S3 full and Lambda related something. Then any tag is required, then create role. What happened? I back to this role and check it.
this is RX6 March role. Okay, so it is created. Now you can attach this role to EC2, to any user. Okay, suppose I want to attach this role to EC2 because we create this role for EC2 purpose. So if I create one EC2, देखता हूँ ग्राफिक्स सेम ही है, PC, Amazon, T2, network, everything is okay, fine, because I am not going to connect it. Key is asking, existing key pair, select any key. So instance is going to create. Once instance running, action, attach security, where security change security group, modify IAM role. Okay, हाँ बताऊंगा पहले देख लो कैसे होता है, फिर वो भी बताएंगे. चूज IAM रोल. सो यहाँ RX ऐसा कुछ था ना, RX 6 मार्च, ये रोल मैंने ऐड किया और अपडेट कर दो तो ये अपडेट हो गया, मतलब EC2 के साथ ऐड हो गया. मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ. ये स्टेप try to clear how to attach any role to EC2 or S3 or any other. স্যার রোলটা তো একটা মানে ইউজারকে দেওয়া এক জিনিস, মানে বোঝা যায় যে ইউজার একটা EC2 ক্রিয়েট করতে পারবে, বাট একটা সার্ভিস মানে EC2 তো একটা সার্ভিস. EC2 এর সাথে আমি যদি একটা IAM রোল অ্যাটাচ করি, মানে যেটা আপনি করলেন, সেটা মানে মানে সেটার অ্যাকচুয়ালি ইয়ে কি? বুঝেছি, সেম কোশ্চেন এখানেও আছে. আচ্ছা, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट का सेम पावर ना, सभी का सेम पावर. कोई किसी के ऊपर ओवर रूल कर सकता है, तुम ये करो तुम वो करो, होता है? नहीं होता है. सबका सेम पावर है. एक स्टूडेंट है उसका एक्स्ट्रा पावर है, मॉनिटर, क्योंकि उसको पावर दिया गया है, तुम क्लास को देखना. ठीक है, उसी तरह AWS में भी ये जो EC2 है, अलग अलग जो सर्विस है ना, सब सेम पावर का है. EC2 कभी ओवररूल नहीं कर सकते S3 के ऊपर या दूसरे के ऊपर, वो सेम पावर का है. मैं EC2 को एक्स्ट्रा पावर दे रहा हूँ कि भाई तुम S3 का फुल एक्सेस दे दिया, तुम S3 ऊपर ओवररूल करो, तो वहाँ से उसको S3 के ऊपर ओवररूल हो सकता है. ये मैं दिखाऊंगा सिनेरियो बेस लैम्डा में. आपने तो दिया ना. हाँ, यहाँ जैसे है, यहाँ आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रोल देना है. जैसे इन फ्यूचर जब लैम्डा करेंगे तब जाके ये और क्लियर होगा कि लैम्डा को कौन सा रोल देना है. ठीक है, क्योंकि इसे समझने के लिए एक तो सिनेरियो चाहिए ना, तब आपको समझ में आएगा. मैंने सिर्फ ये दिखाया कैसे अटैच होता है. ठीक है, अटैच होने से क्या होता है वो भी क्लियर हुआ, लेकिन क्या देना है, कैसे हो रहा है, ये लैम्डा के साथ होगा. ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, लैम्डा जब क्लास में आएगा ना ये क्लियर हो जाएगा. तो मैं PC को टर्मिनेट कर दिया और चला रोल में. रोल इफ यू क्रिएट नंबर ऑफ रोल, नो इशू. रोल, IAM यूजर, ओके. रिसोर्स रिलेटेड दैट इज बिल. एनी EC2 बना के छोड़ दिया, S3 बना के छोड़ दिया, तो वो बिल से कनेक्ट होता है, जो भी रिसोर्स रिलेटेड. ये हेलो,
Yes, sir, I had a doubt. Yeah, tell me. Sir, what is the main difference between this roles and policies? What is the Main differences between these roles and policies in IAM? roles and IAM? Yeah, roles and policies. Roles and policy. Yeah. Collection of policy is a role. Collection of roles to, you can say, allow to user, IAM user. Roles means collection of policies. Yeah, and these roles can be only assigned to the services, right? And policies can be only assigned to the users When under you are IAM. adding anything, when you are adding anything, when you are creating any users, okay, when you are creating any users, check it, add permission. Here I am adding some permission. This is administrator access. This is a permission. Inside of this, if you click here, inside of this, it is going to show you the permission. How many permissions are there? Number of permissions are there. Okay, these are, say if I am going to check permission, what it is? Permission define this policy. Okay, so in this policy, this is one permission. Inside of again something, inside of again something. So policy means, policy version 1, policy means one simple permissions. Collection of that policies. Collection of that policies. That is permission basically here. And collection of that permissions as a role. Because when we are going to create any role, what I am going to add? This is a role. Suppose our manual role. This is a role. Within this, what are the permissions? Administrator, EC2 container, EKS, EKS1. So, what is your role name? EC2. What are the permissions? These are the permissions. Okay? These are the permissions. Inside of these permissions, again, policy is there. If you click here, it is going to show all the policies. It will take some time. Number of. Check it. Permissions defined in this policy. So these are all policy. If you click here any policy, it is going to show some sub policy. If you click here again, one by one it is going to show that within this, these are the policy defined. So policy is the minimum unit. Okay, policy to permission, permission to role, role to user or any other resource. Okay, right now, last topic what we are discussing, this, आप लोग बोल दो, और भी कुछ question है? I think there is a lot of interruption for this background noises, Majum there. Giving access or कुछ power to EC2 or non-living things doesn't make sense. वो भी आएगा, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? So user is created, psi user, and what is the permission of psi user? Administrator access. Now security credential. Inside of this security credential, access key, create access key. Why I am creating access key? Command line purpose. I understand. Next. Description not required. Create access key. So this is your access key and this is your secret access key. It is just like username and password. Okay.
Why it is required? See, from my machine, my desktop, I want to execute one command, and that command is going to create EC2, S3, BPC, RDS, any resource. Okay? Command through I want to create. Now, when I execute the command, how this command line is going to understand that in which account of AWS it is going to create? In which region, Mumbai or Singapore? Okay? For that purpose, this access key and secret key is important. So, first option is we have to install AWS CLI install Windows. CLI, that is one software. We have to install this CLI software in our local machine. How to install? Where you want to install? Say Windows. Right now Windows. So click here. Then download and run AWS CLI MSI format. Either this command, just copy and paste it in SQL. It is going to download. Or click here and download the MSI. After download, we have to install it. Double click, next. MSI, same as your putty also MSI. Next option, AWS software CLI is installed or not. How to check? AWS version. In CMD, AWS version. It will show AWS already installed this version and Python also this version. Okay? So installation I am not going to show. You just click, download and double click, next. Installation. हाँ उसको yes ही करना है, नहीं तो ऐप को तो नहीं देगा ना. Then you just check it the version. Once version is okay means your CLI is installation over. Okay. Now CLI installation over, but we have to connect this desktop command line to my account which is in Mumbai. Okay. How it is possible? So sorry for the interruption. So can't you run the Voice is CLI not commands clear. directly from the console? Your voice is not clear. Uh, So best option, call me, then I can help you. Your voice okay, is not clear. okay, sir. Now, Now little bit. okay, sir. So my doubt was, can't you run this CLI command directly from the AWS console? CLI command directly. From AWS console. I didn't get your point. CLI command. CLI commands from the AWS web browser console. Like you Again will be your voice is having down. one. Okay, sir. I'll call you later. Yeah, whenever or in group or in your personal group, you just send your query. Okay. Hmm. 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 हम लोग EC2 इंस्टेंस जो बनाते हैं वो लिनक्स में वर्क करता है ना, तो हम ये कमांड प्रॉम्प्ट क्यों यूज कर रहे हैं? कमांड प्रॉम्प्ट. क्यों यूज कर रहे हैं विंडोज का? पूरा क्वेश्चन बोलो. हम जो EC2 बनाते हैं वो लिनक्स में वर्क करता है ना? लिनक्स में वर्क करता है मतलब लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों विंडोज नहीं करता है? नहीं, लिनक्स का अलग होता है ना कमांड प्रॉम्प्ट, इसलिए बोल रहा हूँ. हाँ वो तो ओएस का हो गया, एक मशीन का. अब बोलो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, समझ गया. समझ गया? क्या समझाए? मुझे लगा कि जैसे कि हम लोग EC2 क्रिएट कर रहे हैं तो वो सिर्फ लिनक्स के लिए क्रिएट कर, तो लिनक्स के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट यूज वो तो एक मशीन बना रहे थे, मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट है. और यहाँ एक कमांड प्रॉम्प्ट लिया जो मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ AWS के लिए, वो पूरा काम मैं कमांड से करूँगा. इंडस्ट्री में ग्राफिक्स नहीं चलता है. कमांड से करेंगे सर, बट दैट इज नॉट थ्रू लिनक्स, राइट? अभी ये तो AWS का कमांड है. ठीक है.
how to install and configure AWS CLI on Windows. कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लेना, मन में मत रखना. तो CLI installation, I think it is over. CLI installing, updating, installing release 2, building installation, CLI source, official Amazon is here, Docker image, and setting up AWS CLI. Configure using AWS, manually editing credential. इसका आगे भी कुछ कमेंट है. Just now we completed which portion? The CLI installation, and we check AWS version. दिखा रहा है आपके मशीन में? इंस्टॉल किया आपने? अच्छा, नहीं वो शायद इंस्टॉल कर रहे हैं. इंस्टॉल कर रहे हो ना? देख लो एक बार. हो गया इंस्टॉलेशन? हो गया ना? वर्जन दिखा रहा है? हाँ, वो देखो पाइथन भी दिखाएगा क्योंकि ये डेवलप इन पाइथन, इसलिए पाइथन 3.11 या 1.2 कुछ एक वर्जन दिखाएगा. चलो उसके बाद AWS कॉन्फ़िगर और एंटर. व्हाट इज दिस AWS कॉन्फ़िगर? व्हाट इट इज आस्किंग? 4 क्वेश्चन इट इज गोइंग टू आस्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज AWS एक्सेस की आईडी. कौन सा एक्सेस की आईडी? अभी जनरेट किया था ना ये पर. इसका एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन है, दैट इज फुल परमिशन. सो जस्ट कॉपी दिस एक्सेस की आईडी एंड एंटर. सीक्रेट की दिस वन. AP South 1 मुंबई रीजन. सो एंटर. तो इसमें लिखना पड़ेगा अगर दोनों कुछ अलग आया यहाँ पर. सपोज यहाँ पर दूसरा कुछ आया. क्या आया? यूरोप, नॉर्थ वर्जीनिया कुछ आ गया. US ईस्ट 1, तो उसे चेंज करके AP साउथ 1 लिखो. ठीक है. नेक्स्ट क्या पूछा है? जेसन आउटपुट. ये जेसन ही आउटपुट होता है. एंटर करो. व्हाट हैपन राइट नाउ? कॉन्फ़िगर आल्सो ओवर. टाइप करो. हाँ, AP साउथ 1 जैसे AP साउथ 2 3 टाइप करो. जैसे मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया ना, मैं टाइप भी कर सकता था ना. नाउ স্যার একটা কথা, এই অ্যাক্সেস কিটা, যেটা এই অ্যাক্সেস কি আর সিক্রেট অ্যাক্সেস কি, এটা তো এই পার্টিকুলার সাই ইউজারের জন্য নাকি? সাই ইউজার এজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সো ওভারঅল চলবে. ও তো আচ্ছা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর না, রুট ইউজারের ইকুইভ্যালেন্ট. আচ্ছা, ওকে ওকে, ওকে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন দেওয়া হয়েছে. ঠিক আছে স্যার. Okay, so AWS command line is AWS, then what type of resource, and then your command. No error, that means everything is okay. What I am going to check through AWS command line, I am going to check S3 ls. That means any S3 is there, then show the name list, same as Linux command ls. Okay. Now in this location, if I am moved to सर ये दोनों की से जस्ट बी कनेक्टेड. क्या ये दोनों की जनरेट कनेक्टेड नहीं, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है.
S3. Click on bucket. So there was no bucket, right? Through command line, AWS S3 make bucket, bucket name, it will show that make bucket failed S3, this error occurred, bucket already exists, ये name already exists globally. Okay, so let's change little bit. It is also already exist. Now it is created. Okay, graphically if you back to here and just refresh, check your bucket, same MNSN 1429 ABC. This bucket is created. From here, command through ls, it will show the bucket name. Okay, in this way, through different command, you can create EC2, BPC, RDS, anything. Okay, but command is little bit critic, and industry is not going to use this command line also. Okay, 1%, 2% use is there, but option is there. Graphics also 1, 2% or 5% graphics use, 5% command line use, 90% what? Terraform, DevOps tool. Okay, 90% is Terraform. 5% graphics, sometimes graphics is required, so we are going to log in as a graphically, or sometimes this command, small issues, okay, through command line. But 90% is DevOps tool, Terraform. All the resource creation, modification, deletion, everything. Totally infrastructure as a code, that is Terraform. In AWS also same type of tool is there, that is cloud formation, but maybe 1% company used, but 99% company they use Terraform. That time we will discuss it. Okay, but you have to know what is CLI, how it is installed, how it is configured, how to create it. If you check in Google AWS CLI create EC2, it will show the command, full command is there, because in EC2 you have to mention the EC2 name, you have to mention the AMI, you have to mention what type of machine, BPC, subnet, so many things. It's a lengthy command. Okay, it is not possible to remember each and everything. Okay, so मैंने अभी क्या बोला, उसमें होता है लेकिन याद नहीं रखना पड़ता है, कॉपी पेस्ट होता है, एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है ये, ओपन बुक एग्जाम, कॉपी करो पेस्ट करो, लेकिन इतना क्या कॉपी करे कहाँ पेस्ट करे, वो अगर नहीं हुआ तो गया। ओपन बुक के बाद भी लोग फेल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट मेन है, इतना लंबा लंबा कमांड यहाँ नहीं रखना है, ठीक है। क्या मैं जितना पढ़ा दूंगा यहाँ से सर्टिफिकेशन करोगे। मेरा लड़का AWS सर्टिफिकेशन कर लिया, मेरा लड़का मेरे से ही पढ़ के AWS सर्टिफिकेशन कर लिया, हो गया, निकल गया उसका सर्टिफिकेशन, ठीक है। दे सकते हो, वो दे रहा है क्योंकि वो उसे चेंज करना है, उसका एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, अभी वो कुबरनेटिस का प्लानिंग कर रहा है, लेकिन लास्ट 2-3 दिन से रात 2 बजे तक काम कर रहा है, उन लोगों का कुछ डिप्लॉयमेंट होना है, रात 2 बजे तक मीटिंग चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि डेडलाइन होता है ना एक, अभी डेवलपमेंट में है, तो इसके आगे कुबरनेटिस करेगा फिर चेंज करेगा, क्योंकि कुबरनेटिस का हाई डिमांड अभी मार्केट में। कुबरनेटिस अगर तुम कर लिया और सर्टिफिकेट है, अभी अपलोड करके देखो कितना कॉल आता है दिन में, ठीक है। फिर भी इतना कुछ बताने के बाद भी लोग पढ़ने के लिए रेडी नहीं है।
ठीक है, तो अभी जो ये कोर्स करेंगे उसके बाद कुछ क्या करना है? सर्टिफिकेशन नहीं करना है, उस टाइम बताएंगे, अभी मत टेंशन लो। उस टाइम पासवर्ड ईयर के साथ बेस करके तुम्हारा सीवी बनाएंगे, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कशन होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, उसके बाद कुछ करेंगे, क्या क्या जरूरी होता ठीक है। So this is the way command line through you can create it. Through command line also you can delete it. Number of commands are there. So I have to use the same name. Delete it. Now next option is MFA, multi-factor authenticator. Okay, multi-factor authenticator. So multi-factor authenticator purpose, in your mobile, first you try to download गूगल प्ले स्टोर। अगर एंड्रॉयड फोन है, अगर मैक है तो मैक के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर। Authenticator. See this app, okay, Google Authenticator. You have to download it. मेरे मोबाइल में भी देखो ये पर गूगल ऑथेंटिकेटर, ये मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है, इसको यूज करना है। हाउ टू यूज इट? আচ্ছা স্যার, এটা আমি মাইক্রোসফট অথেন্টিকেটর দিয়ে করেছি, মানে করা আছে। एक मिनट, so within this IAM user, shy user, security credential, or your root user, security credential, root user security credential. For my root user already it is multi-factor is already running, okay, so I am showing through that particular user, shy user, users shy security credential, and then this is multi-factor authenticator. Assign MFA device, device name anything, you can write your name also, and then these are the options: passkey or security key, authenticator app, and hardware TOTP. If I choose authenticator app, then next it is going to ask, see, show QR code. When I click this QR code, it is going to show the QR code. Using this authenticator app, first time when you start it, you have to scan this one, you have to scan. Once you scan, it is going to send one by one 2 numbers here, that is MFA code, you have to put here, first MFA code, second MFA code, over, immediate add MFA. Now your mobile and your account is connected. Now just log out and try to log in. Next time onwards it is going to ask the MFA. Okay, very simple way, but this process try to remember, that is your root account, security credential, then under this security credential, multi-factor authenticator. Now here it is already one running, and don't delete it once you create, okay. Then from here only options are there, create access key, create MFA, like this. So you have to create it. When you click, automatically it will transfer where? The same locations. If I am going to use this users shy security credential, from here assign MFA device, there also it is going to show assign. Once you click here, same location,
As a root also same location. You just choose authenticator app and name also. Then next, then click, and with the help of your authenticator app, scan it. Once you scan, 2 numbers is going to return. You just put it one by one and then add MFA. Complete. Now log out and log in. Understand? So this is MFA, multi-factor authenticator, and IAM user and role. Policy, later I will show you. You can write any policy without knowing any JSON code. AWS, one site is there, they are going to provide it. Okay? Database time it is required, then I will show that time. Now if user is there, no issue. Any 1, 2 user is there, no issue. MFA also free of cost. Users, role, policies, these are free. Resource if you create, that is not free. EC2, S3, BPC, RDS, okay, these are Lambda. Lambda ultimate up to certain limit free, and then billing. So this is overall idea.